Good evening, everyone. This is Kumar Swami Veer Maheshwar Charitable Trust Latur MS India organizing daily international webinar series. In this series, the speakers from India and abroad are invited. The speakers are presenting their speeches every day on different topics as per their field of research or study. This series welcomes the subjects from education, law, commerce, financial, environmental, technology. All subjects are appreciated and accepted here. This series is running from last 5 years, and this series have recognized with Asia Book of Record, India Book of Record, and International Book of Record for maximum webinars organized with women resource persons. So it is the women empowerment series. If you see the list of speakers, mostly are the women resource persons from India and abroad. Today in this series, we welcome Nikita Soni madam, who is research scholar from Delhi School of Economics, Delhi, India. And her topic is financial planning. I welcome you, ma'am, and welcome all the participants, those are joined here and joining here. As per her research area, she is the from field of commerce, so that her topic is financial planning. She have published research papers, also have participated in various international national webinar series and the conferences. I welcome you, ma'am, and I request you can start your speech. Thank you. Thank you, sir, for warm welcome. Just a minute, I'm gonna my PPT to all of you. I hope it's visible. So this session is meant for everyone present here, whether you are salaried, self-employed, a teacher, a professional, homemaker, even someone planning retirement. So today we'll not use some heavy finance terms. We'll talk about money in a very practical, real life way, things you can actually apply after the session. That's why my session name is Financial Planning for Everyone, making money easy for your life. And that is work for your life. Because financial planning is not about becoming rich overnight. It's about peace of mind, stability, and having choices in life. So, coming, what is actually financial planning and why it matters? So, financial planning is aligning your money with your life goals. Means using your money in a planned manner so that it support your life goals. And these goals can be short term, medium term, long term. Let's say your children education, some travel plan, retirement plan. It can be any varied from 1 year to 10 years. So it's not about how much money you have today. It's about how prepared you are for tomorrow. Financial planning gives clarity, direction, and control over your money. And why it matters? Let's say most of us here are educated, we have degrees, we have skills, we have experience. But despite being educated, many people still struggle financially. Why? Because education does not automatically give financial security. Many people earn good money, but they still live paycheck to paycheck. And income alone also does not create wealth, but planning does. And finally, working hard does not guarantee financial success if money decisions are not smart. So, financial planning helps convert income into a long term security. Let's take an example. Imagine two people earning the same salary, that is 50,000 per month. One saves and invests regularly, the other spends without planning. But after 15 years, one has assets and peace of mind, while the other still worries about expenses. And in today's world, when rising inflation, uncertain job markets, medical emergencies, and increasing life expectancies make financial planning a necessity rather than a choice. Then, what are the pillars? So basically, financial planning depends on five pillars, which is income and cash flow. It basically involves understanding all sources of income and tracking where your money is spent, like where it is coming and where it is going. If you have a positive cash flow, means your income exceeds expenses. So it means you are going somewhere right, and maintaining surplus, matlab more cash
at your home or at your account is essential for savings and investment. Second is expense management. Expense management focuses on identifying necessary and unnecessary expenses. When you track your expenses, you somewhere realize that where your money is going, and then you can bifurcate. Is it need? Is it want? Or is it desire? Or is it luxury? And you can also cut down your expenses when you feel that you are spending more than your capacity. And also, currently, conscious spending is very less, and inflation spending, lifestyle inflation spending is becoming more. So conscious spending, understand the financial planning is very important. Then third is savings and investment. Savings provide safety, while investment help grow money. Here we have to understand this difference. People generally confuse. They save their money in the bank, they keep in the FD, they keep in the RD for the longer time, but they don't understand, they forgot that investment is what actually which helps you grow. Savings keeps your money intact, but investment help you grow money, and it actually beats inflation, which we'll understand in coming slides. Savings alone are insufficient because they do not beat inflation. Then risk protection includes health insurance, life insurance, which is very necessary in current days, especially health insurance, because unforeseen events such as illness, accidents, or death can happen anytime. Then lastly is retirement planning, which ultimately we all look for. Retirement planning ensures income continuity after active working years. It focuses on financial independence. It's not about earning at the 60, after 60 years, 65 years. It's basically being financial independent at even that age. So even if one pillar is weak, the entire financial structure becomes unstable. So if you have to be very tangent, very pungent about your finances, you have to make ensure that all the five checklists, all the five pillars, you are doing everything in those five pillars. There's a checklist in all the five pillars, and you're able to maintain it. And the first and the foremost step is budgeting. Budgeting is key. If anyone wants to go into the finance, I would always recommend reading this book, The Richest Man in Babylon. I know there are other books in the market as well. We all read the psychology of money and everything, but there's this book, The Richest Man in the Babylon. It focuses on the savings and budgeting, and it's one of the core finance book. If anyone wants to go into the savings and investment, it's a very 100-page book. It's a must read. So what is actually budgeting and why it is known as foundation? Budgeting means budget all of your expenses and keep a 50-30-20 rule, which is not a necessity. It's a flexible, but only plus or minus 5 is allowed. 50% needs, 30% wants, and 20% savings. So budgeting does not mean cutting all the enjoyment. Generally, people get scared that budgeting means that you can't spend. You have to keep your money safe. But budgeting is not that. Budgeting means deciding in advance how much to spend, save, and invest, and where to spend. According to 50-30 rule, 20 rule, 50% of the income should go towards needs like rent, grocery bill, 30% towards like shopping, eating out, travel, and 20% towards savings and investment. And also, if you cannot save 20%, start with 10%. The habit is more important than the amount. Consistency basically matters more here. So if you just, for example, earn 40,000 and save just 4,000 monthly, that's 48,000 without any bonus or increment. And also the expenses, the unneeded expenses get cutted out. Then the emergency fund. The next thing everyone should have, that 6 months of expenses in their safe instruments. Instruments means the liquidity is higher in that instruments. An emergency fund is basically money kept aside for unexpected situations, चाहे वो medical emergency, job loss, or urgent family need. And this fund should ideally cover at least 6 months of your regular expense and should be kept in a safe and easily accessible instrument like saving account. Generally, emergency funds are kept in the liquid fund, that is your saving account, which the normal account we have in our country. And because emergency funds prevent us from taking loans or breaking long-term investment, we can take a small example like why emergency funds help. Let's say there's some hospital expense come into your view and you don't have any insurance, and that expense is 2 lakh rupees. When you have an emergency fund, then there will be you have easily money to recover that. You don't have to take any loan. You don't have to take any stress that how you will cover that 2 lakh. But if you don't have an emergency fund, and we all know hospital expense need immediate payment, so you will have credit. You will take a credit card loan. You will take a personal loan, which will be 18 to 24% at an immediate pace. So not having an emergency fund creates more credit in your life than basically saving you with something. So the important lesson with this example is an emergency fund saves money, not only money, but dignity and a mental peace as well. Because
not if you don't have an emergency fund, it means you don't have a credibility or a source of income to give even pay your credit at a much regular pace. Then we have investment basics. After saving, after having emergency fund, then we have to move on the investment, which is a very important part of a financial planning. And investment does not depend on a regular income. Even if you have a small amount of income, then only you can invest, because it lies on a three basic principle, that is safety, growth, and liquidity. It means that when we are thinking of investing, which everyone we should divide our money into three parts. First is safety, then second is growth, and then third is liquidity. What is safety? Safety means keeping our capital protected, which we keep in our bank. That is basically safety. But the interest on the savings account is really anything. It does not even beat, not near even inflation. So we always recommend in the finance, go for the fixed deposit. It's somewhere beat your inflation, and it always uh, keep your safety insured. So the first step, if anyone wants to invest, start with the FX deposit, because it gives you a safety element to your capital protection. Then the growth. Here, growth beats inflation. So for the growth, you can go for mutual funds, SIP. The least amount you need 200 for a excess mutual fund, and two, you can go for the 50,000 and 1 lakh SIPs mutual fund. It's basically giving every month, depositing every month, and even the index one. And the third part is liquidity. Liquidity means immediate liquidity. Then, which is saving accounts and the liquid fund, because whenever you need immediate cash, which we use in our bank account through all the fintech, UPI wallet, and everything. So there's one of the biggest myth in our mind, ki investing means risk. If you are trying to invest, it means you're taking a risk, but risk does not come from investing. Risk come from not investing at all. Why? Let's say this is an example, very nice, that for example there are two person A and person B. They both started SIPs, which is basically growth segment, the mutual fund. But person A started at 25 years and person B started at 35 years. Their amount is same, 5,000 per month. Expected annual return is same. So they both invested into same mutual fund. And since person A started from 25 years, his investment duration is 35 years. And person B invested 10 years later, so his investment duration become less, 25 years, because both of them have same goals. So total investment by A is 21 lakh and person B by 15 lakh. And the final value, which is approximate value, person A earns 1.2 crore and person B earns 57 lakh. So if you calculate a proportionate rate, like 21 lakh pe you are getting 1.2 crore and 15 lakh pe you are getting 57 lakh, person A is getting more, because even the amount is same, person A invests 10 years earlier, and the power of compounding creates a massive difference. So key learning here is time is more powerful than money. No matter the interest rate, time, here the time is a key ingredient, and starting early matters more in investing. It's not about what is the balanced combination or where to invest, which to invest, but most importantly the time should be there. Then the thing which I was telling, the inflation savings, like sorry, okay, ठीक ठीक. Then impact of inflation on savings. The one of the biggest question and a dilemma when someone asks in the investment world, that is FD, to invest into FD or to invest into investment. Because generally people say that we don't want to invest in stock market or mutual fund because we are not that much risk taker. So it's very good example to understand that you can even safety purpose as well and then growth purpose as well. The mix of both is very important. Let's say a person have invested in 10 lakh rupees into fixed deposit and every return is 6%, currently 7 something, it's not never more than that, and inflation rate is also 6% per year, and time period is 20 years. एक person ने 10 lakh rupees का FD कराया for 20 years. Now FD value is approximate 32 lakh. After 20 years, when the FD mature, the value is 32 lakh. But the purchasing power is not 32 lakh. Why? Because the inflation is really growing at that rate only. So it gives you 10 lakh rupee. So real growth is almost zero. You will see that your account, the money in your account has been grown, but the real growth is very zero. But now if you compare with an investment, the same 10 lakh, agar aap mix mid-term mutual fund mein if you invest, it give you 10 to 12%, and the value after 22 years is around 67 to 96 lakh.
The key learning is fixed deposit protect capital. 10 lakh was 10 lakh. That's why FD, PPF, it always comes into the safety combination, not a growth combination, but it do not increase the real wealth. Inflation silently reduce purchasing power, which is not clearly visible, and long-term investment are necessary to beat inflation. So if you are even not a venture risk taker, you can still you have to invest in some growth fund. You don't have to invest into option futures, hedges, or stock market where there are more volatility. You can just invest into some safely avenues. Then next is insurance. Apart from the savings and investment, another important aspect of the financial planning currently in these days is insurance. Insurance is basically, first of all, health insurance. Before taking life insurance, health insurance is more important because medical inflation is very high, and the cost is even a short hospital stay. Average short hospital stay can cost lakhs of rupees. And also, the employer provided health insurance is helpful but not sufficient. So everyone should have a separate personal or family or the family health insurance policy. Then coming to the life insurance. So life insurance, generally one of the confused myth about the insurance is that people correlate or the use it interchangeably, that insurance is investment. But let me tell you, insurance is not an investment. Insurance is an insurance, and investment is an investment. Why? Generally people take life insurance. That's their first go-to choice, to take a life insurance, because they feel that it will protect their life and it will give a investment. But in life insurance we have so many plans. If you take about whole life, it basically protects your family financially in your absence. It's not an investment product. And term insurance, the next thing is term. When you take a whole life insurance, it will protect your family in case of your death. But let's say if you take a term insurance for, let's say, 30 years, you deposit certain amount, and then for the 30 years, and after the 30 years when the time matures, you get. Again, it's not an investment, it's an income protection. The amount you have deposited with a certain percentage comes out back to you. So it's again an income protection. It's not an investment. Term insurance provide maximum coverage at a low cost and ensure that your family lifestyle and goals remain same. So insurance is not the investment. Investment again goes at another level where there is a fixed rate of return. Then retirement planning. Retirement planning is about ensuring that you do not depend on anyone financially in your later years. It's not linked to age. One of the most misconception in all of our mind is that retirement planning is about when we become of a certain age, that all we have that money. But it does not related to the age. Even if a person decides to retire at 32 years or 35 years or even 40 years, then also after that, he should have, or he or she should be financial independent to cover all of his lifestyle or all of the expenses, all of the needs. So retirement, earlier it used to be termed with the age like 60, 65 years, when the it is a government applied retirement age. But today the young generation is also earning huge. They are having their investment portfolio and they're retiring. So retirement is basically, if doing your job not because you love to, but not because we have to. So when you stop working, then it is about, with and especially with longer life expectancy and rising medical costs, retirement planning has become more important than ever. And this retirement, and the basic life tools for the retirement planning, which is very safest option, is PPF, NPS, and mutual fund. And it's a very safest tool. And if you want to take more risk and you have even more capital at your hand, you can definitely go for the stock markets. And I have seen people having 2 crore portfolios, 3 crore portfolios, just because they started investing at an earlier stage, and with the right research, they invested in a right avenue, not just by hearing and here go, which is basically this common financial mistakes which I want to talk. That all this thing, that savings, budgeting, investing, and then retirement planning and insurance, they are the key parameters of the financial planning. That when a person wants to plan their financial, all the ins and outs, these five parameters, just five pillars which we have wrote, these are the five pillars which I started with. So these five pillars has to be cross checked, has to be
calculated. So the process is like that only. That firstly you have to think where you clearly stand at the current pace, at current in the current life where you are. Then what are your goals? Because without goals, financial planning is nowhere, no direction. You have to take where are your goals. If you have a short term goals, you can go for the short term avenues. If you have a long term goals, for example, retirement plan is a long term goal, so you have to invest in those avenues which will give you a return at a longer pace and a longer shield. So the common financial mistake we all see is that delaying investment, which is the primary mistake happen in India, in our country, because of not having the money culture. We all have studied science, commerce, arts in our school and colleges, but no one teaches money. But if you see, our life depends on the money. So when many educated people delay investing, thinking they will start later, but we have seen the example, the starting late loses you compounding effect and loses you a lot of money. And another mistake that is commonly followed is following the tips from friends, social media, WhatsApp, without understanding risk. If someone has invested in something and they are getting return, we blindly follow them, but we don't understand that maybe that person risk capacity is different and your risk capacity is different, your goals are different, that person goal is different. What your friends earning money, but that money will grow even in 10 years, but your goals are just 2 years. So you can't just copy someone just because they are having success. And other is mixing insurance and investment. It's really one of the biggest mistake that we think that when we do insurance, it means we have parked our money, but we do not have parked our money, we have blocked our money, but we have put our money into some other use. Insurance is saving your uh, giving a financial independence to your family in case you are not present. It's not about giving your money to use yours in a investing term. Then ignoring inflation completely. We don't calculate or we don't inculcate the inflation when we calculate the rates. We just, whenever any scheme we took, we just see ki this is the return it is giving, so it means the money will double like this, money will triple like this, but we do not calculate the rate of inflation, that how inflation is increasing and how it will impact the final value. Then awareness. So awareness is very important, which actually helps to avoid this mistakes. Then the key takeaways from this session, I want all of you to take that: start early, even though start small. You don't need to do everything at once. Like you don't have to take 20% out or 20%. For example, if someone is not earning, they are getting a pocket money. Still, you can save certain money. When you start early, start and then save it. You keep your expenses to below, and then you can later on start saving. Then small steps taken consistently lead to big result over time. And protect first, invest second. Always start with saving FD and then go to the investment on the capital market. In the case, maybe it's a SIPs or maybe it's case of a stock market. Currently, the youth runs on the IPO. They generally try their mind ki let's book an IPO. Let's maybe IPO lag jayega, we'll get a dividend. Don't run to the stock market. Always start with the protection. That's why there was a 3 pillar: safety, growth, and liquidity. Then review your finances yearly. Always review where your finances stand, where you stand, and where, if your goals are changing, your financial planning should also change. So you don't need to do everything today. Just take the first step, and awareness itself is an achievement. There's this famous quote by one of the financial advisor: the best time to start was yesterday, and the next best time is today. Even if you lose today, then you're losing more money. So financial planning is not about numbers. It is about freedom, dignity, and peace. That how you can take, how you are financially planning, how you are utilizing your finances to the best. So thank you for your time, and I hope today's session helps you to take confident steps towards a secure financial future. Yeah. हेलो, नमस्ते मैडम। Hello, sir. मैडम, मेरा सवाल है कि जब इन्वेस्ट करते हैं और हेलो जब इन्वेस्ट करते हैं तो
उसको रिटर्न फाइल में कब दिखाना होता है? अगर एक एग्जांपल रखता हूँ मैंने सपोज करो मैंने 10 लाख रुपए मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और मेरा वो अभी 20 लाख हो गया, तो मुझे रिटर्न फाइल में वो दिखाना होगा और उसका जो इनकम के ऊपर टैक्स लगता है वो कैसे लगता है? सर देखो, अगर आप इज लाइक स्मॉल टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दो फॉर्मल टर्म्स यूज होती हैं। अगर आप अपने जो इनकम है, लेट्स से आपने जो शेयर खरीदे थे, अगर आप वो 1 ईयर के अंदर अंदर ही सेल कर देते हो, तो ऑब्वियसली जैसे 10 लाख का जो 20 लाख हुआ, तो वो इनकम आपकी बढ़ गई, आपने सेल करा तो वो 10 लाख पे आपका प्रॉफिट मिला, उसका रेट डिफरेंट है, वो आपको इनकम टैक्स में वैसे दिखाया जाएगा। और लॉन्ग टर्म का रेट डिफरेंट है, लॉन्ग टर्म का रेट कम होता है। दैट्स वाई हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करो वो लॉन्ग टाइम के लिए रखो, ताकि सॉरी ओके, सो तभी बोला जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, उसका जो टैक्स रेट है, टैक्स ब्रैकेट है, वो कम है और शॉर्ट टर्म का ज्यादा होता है। एंड उसके लिए आप एंड व्हेन यू फिल दैट देयर इज अ डिफरेंट आईटीआर, नॉर्मल आईटीआर से डिफरेंट आईटीआर टूल, उसमें वहाँ पे सारे जैसे ही आप आईटीआर ओपन करोगे, आपकी जितनी भी जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी वहाँ पे दिखाता है द अमाउंट ऑफ टैक्स जो उसमें कटेगा। मैडम जब तक हमें उसको मतलब ये वापस नहीं कर लेते तब तक रिटर्न फाइल में दिखाना होगा या नहीं? जैसे नहीं अगर वो शेयर नहीं मार्केट सर, में नहीं सर, आपको वो नहीं दिखाना। जी धन्यवाद मैडम। एक और सवाल पूछ लेता हूँ मैडम, जैसे पीपीएफ और सुकन्या वगैरह जो पॉलिसी रहती है, ये केंद्र सरकार के अगर बैंक का जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरा एसबीआई में मैंने एक पीपीएफ अकाउंट खोला है और वो कल बैंक डूब जाती है, तो अभी तो बैंक लिमिट 5 लाख की है, तो जो मेरा पीपीएफ का पैसा है वो ये बैंक एसबीआई देगी या केंद्र सरकार देगी? सो वो बैंक ही देगी। जो ऐसे केसेस में क्या होता है जनरली कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ ना कुछ ऐसा सब्सिडीज देती है, नहीं या कुछ भी अमाउंट देती है, बट अल्टीमेटली लाइबल एसबीआई ही है आपके लिए। वो है गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इज गवर्नमेंट, बट आपको जो मेन आप जिस पार्टी को सू कर सकते हो या जिस पार्टी पे आप क्वेश्चन कर सकते हो वो एसबीआई ही होगी। तो कितना वापस देंगी अगर कल बैंक डूबती है तो? सर ऐसा कोई कहीं भी रूल्स में लिखा नहीं हुआ है कि इतने परसेंट मिलता है, वो डिपेंड करता है। कभी कभार बैंक के पास कुछ भी नहीं होता देने के लिए, या फिर वो कोई एक सीलिंग कर देते हैं कि अगर इनके पास है तो अगर फॉर एग्जांपल किसी के 4 लाख अगर ड्यू है तो 10-10 हजार मिल सकते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं पैसा। जब वो रिकवर करते हैं तब वो लोगों को रिकवरी देना शुरू करती है। जी धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जयवीर सिंह जी, अच्छा सब सवाल आपने पूछा, डिस्कस भी अच्छी हुई। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर स्वानंद शुक्ला सर से। स्वानंद शुक्ला सर प्लीज। हेलो हेलो जी सर बोलिए, थोड़ा आवाज कट रहा है मगर फिर भी बोलिए। आई एम ड्राइविंग माय कार एज ए एक्सपर्ट। देयर आर लॉट मेनी investment like SIP and gold and so many things are there. Percentage wise how we can means invest ourselves. Sir, this basically depends on the risk capacity of the individual who wants to invest. If someone have a fund and they are very risk taker, that they want to see that if they are investing more, they are like, okay, if our money goes haywire, we don't mind. So you can generally directly invest entire money in a stock market, but it's a 50-50 game. But again, even if you have so much idle money, I would still suggest that go for the safety as well, that go for the mutual funds as well. You can go for the 30 to 70%. That depends on you.
but always have all the three elements that do have FDs, do have mutual funds, do have index funds, do have all the government schemes, and then the remaining amount you can invest into stock market and even real estates. Yeah. Thank you, ma'am. I want a list, risk. Everybody wants a list risk only, and we want to play a safe game. So, what you suggest, SIP, mutual fund, share market, Then sir, SIPs. or Then SIPs. If you want to have a safe play, then definitely SIPs. And in SIPs as well, you can go for the established mutual funds like blue chip or big funds, or maybe mid cap, but not for a small cap. Oh, great. And one thing what you said that we should spend because money should be there in rotation. And I think it is a wonderful thing what you have said. So wonderful. I was just listening while driving. Some part I missed out because of that range was not there. So thank you very much for your wonderful explanation, man. Thank you, Dr. Sanan Shuklaji. You are in traveling, but still you are attached with our webinar series. Anyone, जयवीर सिंह जी, आप फिर पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज की वाली है. मैडम, मेरा एक सवाल ये है कि लार्ज, मिड और स्मॉल, एक तो इनके बारे में जानना चाहूंगा. दूसरा ये जानना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में सीधा क्यों नहीं जाना चाहिए. सर, जाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अभी जैसे स्वानंद सर ने बोला कि हम रिस्क बहुत कम लेते हैं. शेयर मार्केट में इट्स नॉट कि नहीं जाना चाहिए, एसेट की जाना चाहिए जिसकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट में जाइए बट अपना थोड़ा ज्यादा रिस्क कैपेसिटी लेके जाइए. एंड ऑल्सो मेक इंश्योर कि आपको लिक्विडिटी नहीं चाहिए लाइफ में. आपको लग रहा है कि आपको 2 साल बाद पैसों की जरूरत है तो डेफिनेटली शेयर मार्केट में नहीं जाइए. शेयर मार्केट में हम तभी इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म की डाल के भूल गए 10 साल तक, वो फिर ग्रो होता जाएगा. बट कभी भी जब आपको, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आपके खर्चे आने वाले, इफ यू आर सीइंग कि आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो उस लिक्विडिटी केस में और आपका रिस्क कैपेसिटी बहुत ही कम है तो उस केस में शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए. कभी कभार कोई स्टॉक 5 ईयर 6 ईयर तक पड़ा रहता है, ग्रो नहीं करता, बट देन सडनली स्टार्टिंग ग्रोइंग, तो इट टेक्स टाइम. मैडम, लार्ज, स्मॉल और मिड कैप, ये इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका अर्थ क्या है? सर, इसका अर्थ है जैसे जो NSE 500 कम, जब भी हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं ना, सेंसेक्स और निफ्टी, ये BSE और NSE ने दी है. तो NSE ने टॉप 500 कंपनीज बनाई हुई है. तो शुरू की आप 100 कंपनियां होती है लार्ज कैप, देन 200 कंपनियां होती है वो है मिड कैप, लास्ट की 200 कंपनी जो 500 में आती है उसे कहते हैं स्मॉल कैप. मतलब वो कैपिटलाइजेशन पे, कंपनी के साइज पे वो बिग टॉप उस पे आती है 500 में. तो रैंकिंग करी हुई है, रैंकिंग का डिस्ट्रीब्यूशन से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप करा हुआ है. जो स्मॉल कैप इसलिए रिस्की होता है क्योंकि वो नीचे आता है. लेट्स से कोई कंपनी 499 पे है NSE 500, तो उसको टाइम नहीं लगेगा, वो 502 पे भी हो सकती है. जैसे ही वो 502 पे गई, वो 500 से नीचे ही चली गई, NSE 500 के इंडेक्स से ही चली गई है. तो इसलिए स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि वो कभी भी नीचे और ऊपर हो सकता है. लेकिन जो टॉप 100 कंपनी है वो टॉप 100 पे रहेगी, 10 से 20 पे जाएगी, 20 से 30 पे जाएगी, लेकिन रहेगी तो टॉप 100 पे. जी धन्यवाद मैडम. थैंक यू जयवीर सिंह जी. स्वानंद शुक्ला सर, आपने हैंड रेज किया वाला है, पूछना चाहते हैं? No, sir. Thank you very much. ओके सर, एंजॉय योर जर्नी. थैंक यू. Yes. प्रीति कुमारी मैडम, आप कुछ पूछना चाहती है? गुड इवनिंग निकिता जी. गुड इवनिंग मैम. मेरा एक सवाल था मैम, आपने बहुत अच्छा मतलब डिस्कशन किया है, तो सारे प्लानिंग्स पे बहुत अच्छी चर्चा की गई है. तो मेरा इसमें ये है कि नीड्स और वो मतलब नीड्स पे, वांट्स पे और सेविंग्स, 3 जो बहुत अच्छा मुझे लगा. तो मेरा ये कहना है कि जैसे जिसका इनकम मतलब अगर एक होना चाहिए, जैसा वो अच्छा इनकम है जिसका, एक स्लैब में जो जिसका इनकम है वो तो अपनी प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं. बट मैं मतलब ज्यादातर एज ए मतलब इंडिया के मतलब रेफरेंस में बताना चाह रही हूँ कि अभी भी मतलब 60% से नीचे अभी भी मतलब इनकम में आए नहीं है. तो उसके लिए एक अच्छा प्लानिंग क्या होगा, मेरा ये क्वेश्चन था.
उसके लिए कैसे एक बेहतर उनके प्लान लिए सबसे मिडिल मैन के लिए? सबसे पहला तो उनके लिए प्लान ये होगा, जब वो इनकम मतलब बहुत ही कम इनकम, सबसे पहले जितने कोशिश करें उनका 70% जो रेशियो वो सेविंग्स पे जाना चाहिए। उनका मेजर जो बिल्कुल पोर्शन है, मेजर जो ध्यान है वो 70% आपका सेविंग्स पे ही जाना चाहिए, क्योंकि जब उनकी इनकम कम है तो उनका सारा पैसा नीड्स पे जाता है, वांट नीड्स और वांट्स पे ही रह जाता है, डिजायर्स पे तो जाता ही नहीं है। तो उनका फर्स्ट प्राइमरी जो है वो आप सेविंग्स पे डालें, एंड सेविंग्स के बाद एज मच गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करें जितनी हो सकती। मैम लेकिन 70% वो जब तक नीड्स नहीं, मतलब जो कहने का मतलब एक एग्जांपल है, जैसे वो जब तक घर के लोगों को नीड्स को पूरा नहीं करेगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा मैम, ये मतलब होगा ना इसमें? हाँ, तभी सिर्फ सेविंग्स। दैट्स व्हाई मैडम प्रीति मैम मैंने यही बोला कि उसका सबसे पहला फोकस सेविंग्स, मतलब पैसा चुरा चुरा के सेव करने पे ज्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो वो बहुत बाद की बात है, वो सेविंग्स पे ध्यान दे, क्योंकि जो लोग इस इनकम ब्रैकेट में फॉल करते हैं उनके लिए सेविंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी आए, जो आजकल के टाइम में एनीवन कैन फेस एनी टाइम, तो उनके पास उतनी सेविंग्स होनी चाहिए, कोई भी अपनी इमरजेंसी मीट करने के लिए या कोई भी अपनी डिमांड मीट करने के लिए। तो प्रायोरिटी पहले घर के नीड्स को देना है, और छोटे छोटे आई थिंक छोटे छोटे पैकेज में उसको सेविंग्स करना चाहिए। हाँ, सेव करना है। प्रायोरिटी तो पहले नीड को ही जाएगी, क्योंकि वहां पे नीड और वांट ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी थोड़ा सा भी डिजायर, थोड़ी भी लग्जरी, हल्का सा भी को फोकस करना है, वो फिर सेविंग से ही पूरी हो पाएगी। इसलिए जितना हो कोशिश पहले ही सेव करना शुरू कर दो। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति कुमारी मैडम। जयवीर सिंह जी, आप और पूछना चाहते हैं क्या? जी सर, एक और सवाल पूछ रहा था मैडम मैं 100 रुपये मार्केट में डालना चाहूंगा, एक काल्पनिक उत्तर है मानूंगा मैं इसको, उसको लार्ज मिड और कैप कैसे आप सजेशन दोगे? सर देखो, मैं यही बोलूंगी, अगर जैसे स्मॉल कैप पे लेट्स से 31% इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, और मिड कैप में 18 मिल रहा है, और थर्ड वन में अगर आपको 11% मिल रहा है, तो इंसान सोचेगा कि 31 पे जाते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, 31% पे तभी जाइए 100 रुपए को, जब अगर वो 100 रुपए डूब भी जाए तो आपको दुख ना हो। तो यही होता है सर, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है मैं कहीं और से पैसे इन्वेस्ट करके वो कवर कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप पे जाए, वहां इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है। बट कोई फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास या मिडिल इनकम लेवल पे रहता है, वो हमेशा या तो मिड पे जाएगा, थोड़ा सा वो रिस्क सिक्योर होगा वो, क्योंकि सर बेसिक रूल है, जितना आपको रिटर्न अगर ज्यादा चाहिए उतना आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो पहला प्रिंसिपल आपके इन्वेस्टमेंट का आपको पूछना है ये कि क्या मैं ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ। अगर आपने हाँ बोला तो आप डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न पे जाओ। अगर आपको लगता है एवरेज, तो एवरेज पे जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत पैसा कमा के मैं खुश हूँ, ना से तो कुछ ही बेटर है, तो ऑलवेज गो फॉर द लेस रिस्क। तो लेस रिस्क ऑलवेज मीन्स लेस रिटर्न। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत ही अच्छा आपने सजेस्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयवीर सिंह जी। क्योंकि ये जो आपके जो बेसिक क्वेश्चंस थे उनका मैडम ने हल किए वाला है। क्योंकि जब फाइनेंशियल प्लानिंग आती है तो इन्वेस्ट कैसे करना, क्योंकि हमारे एक टीचर है कॉमर्स के यहाँ मेरे गांव में, तो उन्होंने पहले दिन से शुरू की थी इन्वेस्टमेंट करना, पहले पगार से ही। तो वो बोले कि सर आज का बैलेंस एक्स है मेरा, क्योंकि हमारे एज के और हमारे साथी लगे वाले। तो आप जो मैडम ने बोले वाले उदाहरण कि जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, सेविंग करना शुरू कर दो, उतना हमें फायदा होने वाला है। ये सही उदाहरण हमारे एक फाइनेंशियल सर रहने से, कॉमर्स के सर रहने से, उन्होंने पहली सैलरी से शुरू कर दिया वाला है। थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जी 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 हेलो मैडम जी, मैडम वो जो सेंट्रल LIC है और कुछ नेशनल इंश्योरेंस है, ये बेहतर है या स्टॉक मार्केट बेहतर है? सर अगेन इसका आंसर भी वही सेम रहेगा कि देखो, रिटर्न तो स्टॉक मार्केट पे ज्यादा है, LIC तो आपको एक बेसिक इन्फ्लेशन कवर कर रहा है। बट अगर आपको ज्यादा फिर रिस्क भी नहीं लेना तो आप इन्हीं गवर्नमेंट स्कीम्स पे रह सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल आप कुछ पोर्शन 10% स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, आई वुड ऑलवेज से कि हैव अ पूजर मिक्स ऑफ सर। एवरीथिंग, हर चीज का मिक्स रखिए। ओके मैडम जी। जी थैंक यू सर।
मुझे अच्छा लग रहा है कि आज से हमारी प्लानिंग शुरू हो जाएंगी। बहुत लोगों की मैडम ने कहा है कि जो टुडे शुरू कर देंगे, कल नहीं, आज शुरू करें तो जल्दी फायदा है, तो प्लानिंग शुरू कर देंगे हम सब लोग, ऐसे लग रहा है। अब मेरा क्वेश्चन इस वेबिनार से नहीं मगर बैंकिंग से है। अभी महाराष्ट्र में एक बैंक लूट लिए वाले चोरों ने, तो उसके पूरे लॉकर्स भी तोड़े वाले हैं, तो उसका रिटर्न कैसे मिलेगा? ये इसमें नहीं मगर बैंक से रिलेशन है आपके सब्जेक्ट का बोल के मैं पूछ रहा हूँ मैडम। सर देखो, इसका ना क्या है कि बैंक हाथ खड़े कर देता है। बैंक बोलता है जब हमारे पास पैसे नहीं, हम रिटर्न कहाँ से करें? अब अगर वो गवर्नमेंट बैंक है तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास उसकी थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी, तो वो कुछ प्रोपोर्शन वापस कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना, उनके पास सिक्योरिटीज़ नहीं होती है। तो वो हमेशा उनका एक ही आंसर रहता है कि जब उनके पास फंड्स आएँगे वो तभी रिटर्न कर पाएँगे, और वो कब आएँगे? जैसे हमारे कितने सारे स्कैम्स हुए, सत्यम स्कैम, हमें कितने सारे स्कैम्स पता है। वो जो लक्ष्मी चिट फंड वाला स्कैम हुआ था, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, बेस्ट है। लोगों को पैसे नहीं मिले क्योंकि वो गवर्नमेंट, उनके पीछे कोई गवर्नमेंट वाली लायबिलिटी नहीं थी। तो सेम हैपेंस, अगर वो प्राइवेट बैंक है तो सेम सिनेरियो होता है, पैसे वापस नहीं मिलते हैं ऐसे। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन हर कोई थोड़ा थोड़ा रखता है सेफ में, तो वो मिल जाता है। बट आपको पूरा आपका वापस डेफिनेटली नहीं मिलेगा। जी मतलब जी रियल लाइफ का सिनेरियो जनरली यही होता है कि बैंक सब नुकसान में ही चल रहे होते हैं, इतना कोई वो अच्छा नहीं कमा रहे होते हैं कि एक्स्ट्रा रखें और आपको रिटर्न कर दें। और एक उसके साथ साथ है जो लॉकर में रखे वाले हैं, लॉकर फोड़े वाले, लॉकर का जो लिमिट रहता है वो कोई बोल के रखता नहीं या नोटिंग करके रखता नहीं, तो ऐसे ब्लैंक लॉकर अगर तोड़ दो उसका रिटर्न कैसे मिलेगा उन लोगों को? ये मेरा क्वेश्चन था। ब्लैंक लोग मतलब जिसमें कोई सामान नहीं है सर आपका? नहीं नहीं, सामान रखे वाला है, लोगों ने बैंक फोड़े वाले है अभी महाराष्ट्र में परसों, हाँ तो सर, उसका। जब हम लॉकर करते हैं ना, जब हम मैंने आई हैव मतलब जब आप कंडीशंस रीड करो ना, उसमें लिखा होता है कोई भी थेफ्ट, कोई भी फ्लड या कुछ भी ऐसा हो, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके सारे इंस्ट्रक्शंस में ये एक छोटा सा सबसे लास्ट सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, तो वो उन्होंने ऑलरेडी पहले बता दिया आपको, एंड आपने साइन कर चुके हो उस पे। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। और कोई चर्चा करना चाहते तो कर सकते हैं, ऐसे तो टाइम एंड होने वाला है। नमस्ते मैडम। मैंने सुने आपका जो भी चर्चा बहुत अच्छी रही और बाकी सब ने भी पूछा। मेरा इसी में रिलेटेड एक प्रश्न था कि जैसे चिटफंड कंपनियां हैं, बहुत बार बहुत जगह हुआ है, हर राज्य में हर इसमें है, तो इसमें जो गरीब या जो मिडिल फैमिली के लोग हैं उनके पे सारी कमाई मारी जाती है। और तो ऐसे में मतलब ये क्या कि रातों रात तो चिटफंड कंपनी बनती नहीं है या रातों रात गायब नहीं वो रातों रात गायब हो जाती है, लेकिन उसको कुछ साल तक वो चलती है। तो ऐसे में मतलब इसमें कहीं न कहीं गवर्नमेंट या कहीं न कहीं कुछ लोग जो है शामिल होते हैं, चाहे पुलिस के भी कुछ समझो या और में, क्योंकि वो चल रही है तो उसमें उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता है? भई वो काफ़ी लोगों की जब वो सब कुछ लेकर चली जाती है, उसके बाद में जो है वो लोग उसके पीछे भागते हैं या पुलिस और फिर जाँच चलती है। और उसमें भी ये होता है कि कोई आदमी ने किस कंपनी के नाम से किया है, लेकिन वो कंपनी बंद कर दी, फिर उसने उसी आदमी ने दूसरी कंपनी खोल दी दूसरे नाम से। तो जो वो आदमी तो वही है, तो उसी आदमी को फिर वो और लोगों को उल्लू बनाए, तो उस आदमी के पर्टिकुलर उसके विरुद्ध क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई हो, या इस ढंग से क्या कानून में क्या कमी या इस ढंग से और क्या कुछ हो सकता है? इस दृष्टि से आप सर क्या आई थिंक इसका बताना चाहेंगे? आंसर तो आपने धन्यवाद मैम। शुरू में ही दे दिया था वो अपने क्वेश्चन में, कि ये तो लूप होल्स है क्योंकि बहुत सारे पार्टीज, एवरीथिंग, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। हमारे हर रूल में सब में लूप होल है, वो इजीली उसका उठा सकते हैं, मतलब फायदा उठाया जाता है। एंड व्हेन यू से कि वो चिटफंड रातों रात गायब हो जाती है, उसके बाद एक्शन होता है। फिर जब उसके बाद एक्शन होता है तो चाहे चिटफंड एंड नॉर्मली देयर आर स्कीम्स ऑफ कमेटीज एज वेल, इसका कोई भी डिटेल रेगुलेशन नहीं है। वो पूरी प्रॉपर इसकी कहते हैं ना, दिस कार्रवाई कह लो या कागजी कार्रवाई कह लो, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कोई अगेंस्ट एक्शन नहीं हो पाता, लोगों के अगेंस्ट केस हो जाता है। बट व्हाट इफ अ पर्सन रन, एंड जो आपने बोला वो दूसरा इंसान दूसरी जगह अगेन कंपनी, दैट अगेन आपने वो पहली लाइन में इस चीज का आंसर दिया कि इतने सारे लोग इनसाइडर इन्वॉल्व हैं, दैट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लूप होल्स हैं ये। इट्स लाइक अ करप्शन इन अ कंट्री, दिस विल बी नेम्ड एज करप्शन। इसका कोई सोल्यूशन रूल में तो है, बट एज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से नहीं है। अभी बाकी ऑन अ रूल, आशीर्वाद करके भी एक बड़ी कंपनी थी जिसने किया राजस्थान में और फिर गुजरात में और काफी जगह ऐसा हुआ है। तो ऐसे में क्या इसमें अच्छा मेरा एक मानना है कि जैसे
अपराधी होता है, भयंकर अपराधी है, तो उसको फांसी की सजा होती है। तो उसी हिसाब से जैसे आर्थिक रूप से जिसने, जैसे हर्षद मेहता था जिसने पूरे देश की इकोनॉमी का भी हिलाया, या जो मिलावट करते हैं जिसके कारण करोड़ों लोगों की जान को खतरा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी फांसी की सजा जो है वो मिनिमम एक होना ही चाहिए, ताकि वो उससे डरे और अपराध को कम हो सके। जब तक सख्ती नहीं होगी अपराध मिटेंगे नहीं, मेरा ये मानना है। चाहे महिलाओं के प्रति हो, जैसे कलकत्ता का मैं उसमें एक वो मेडिकल उसके साथ इतना घोर हो गया, लेकिन उसके बाद में भी वो जांच चल रही है और ढूंढे, नहीं तो इंस्टेंट जस्टिस जो था ना कि तुरंत शूट द साइड, तो वो हो तो ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा। हालांकि मानवीय रूप अच्छा नहीं है, लेकिन समाज की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा कहा। धन्यवाद। सर इसका तो खैर मेरे पास कोई जवाब नहीं है। थैंक यू सूर्यव्यास सर, जिन्होंने आज चर्चा की वाले जयवीर सिंह जी, सूर्यव्यास सर, प्रीति कुमारी मैडम और हमारे डॉक्टर सानंद शुक्ला सर, गुजर सर, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अच्छी चर्चा होने से बहुत सारे जो पॉइंट्स थे डिस्कशन में आ गए वाले, उनका समाधान हो गया है। धन्यवाद मैडम, आपने हमारा निमंत्रण एक्सेप्ट किया है। मैं वही निकिता मैडम को भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिन्होंने आपका जिक्र किया था कि मैडम निकिता सोनी मैडम भी स्पीच देंगे, उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आपको भी हम आगे भी निमंत्रित करेंगे, जो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप यहाँ निमंत्रित रहेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल जॉइंट मेंबर्स। थैंक यू। All participants are requested to fill the feedback link